So this is the question number 20 from 2023 midterm morning session paper, and this question comes under the topic user defined function in Python. So in this particular question, a Python code has been given to you and you need to remove some errors from this particular code, and once you remove those errors you need to underline the correction that you have made in this particular code. So in order to do so, first of all we need to do the line numbering, then we'll go line by line to check whether that particular line contains some error or not. If that particular line contains error, then we'll try to remove that error. Okay, so now in the line number 1 it is mentioned df prime, तो ये क्या है, आपकी फंक्शन को एक डिफाइन किया गया है. देन लाइन नंबर 2 में क्या है, int input enter number to check. Since ये नंबर क्या कर रहे हैं, आपका एक इंटीजर इनपुट करा रही है, which is also syntactically correct. Now in this case, line number 3, for I in range 2 comma n divided by 2, this is also correct. Now in line number 4, if n modulus I equals to 0, this one is incorrect. Why it is incorrect? Because whenever you write the conditional statement, तो उसमें एक assignment operator नहीं आता, आपको क्या आता है, conditional statement आती है. Hence for this one, this should be the underline part. Now in line number 5 and 6, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो if ब्लॉक के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स आती हैं वो सारी क्या होती हैं, इंडेंटेड होती हैं. दैट मीन्स आपको क्या होना चाहिए था, एक आफ्टर सर्टेन स्पेस के बाद ये लाइन स्टार्ट होनी चाहिए थी. ठीक है. नाउ कमिंग टू लाइन नंबर 7, लाइन नंबर 7 इज करेक्ट. नाउ इन द लाइन नंबर 8 अगेन इट शुड बी इंडेंटेड. एंड इफ यू ऑब्जर्व कि जो प्रिंट स्टेटमेंट है आपकी डबल क्लोट से स्टार्ट हो रही है और सिंगल क्लोट पे एंड हो रही है, तो in that case what you need to do, either you can have double quotes on both sides or single quotes on both sides. Let's say for this example we are taking double quotes on this side. Hence for the this one right answer would be the this one. लेकिन अब आपको एग्जाम में लिखना कैसे है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू राइट द करेक्ट कोड, एंड जो भी आपने करेक्शन मेड किए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये और ये करेक्शन क्या करनी है, आपको अंडरलाइन करनी है. सिमिलरली ये और फाइनली ये डबल कोट्स का. ओके, आई होप आपको आइडिया लगा होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है. नाउ बेस्ड ऑन द सिमिलर कॉन्सेप्ट वी हैव अ प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर यू. You need to correct this code and remove the errors from it. Okay guys, then that's it for the day. If you have any doubt regarding this one, feel free to ask in the comment box. Okay then, thanks for your time.